सब्जेक्ट्स आपका क्या है? इंडियन टेक्सटाइल। टॉपिक है फैब्रिक क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप के फैब्रिक। ये भी लिखो, लिखना है जरूरी। स्टडी नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फैशन डिजाइनिंग। हम सब्जेक्ट इंडियन टेक्सटाइल। हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक है फैब्रिक क्लासिफिकेशन। So very important, how we get fabric for outfit। हमें फैब्रिक आउटफिट के लिए कहाँ से मिलता है एंड उसके सोर्सेस क्या हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो कैटेगरी है वो टू इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। पहला है नेचुरल फैब्रिक्स के लिए हमें फाइबर को स्टडी करना है, तो हम इसे कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। जो फैब्रिक हमको नेचुरल सोर्स से मिलता है वो आता है नेचुरल फाइबर्स के कैटेगरी में। और जो फैब्रिक हमें कॉस्मेटिक या मैनमेड तरीके से प्राप्त होता है, लाइक पॉलिस्टर, रेयॉन, फाइबर ग्लास, ये फैब्रिक जो है इसे हम कहते हैं मैन मेड फाइबर्स। क्लियर हो गया? यस मैम। तो कितने तरह के फैब्रिक्स होते हैं और उनके सोर्सेस क्या है? टू इंपॉर्टेंट सोर्सेस, नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल एंड मैन मेड। यस। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं नेचुरल फैब्रिक को हम किस तरह से प्रोसेस में लाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो नेचुरल फैब्रिक है, जैसे कि एग्जाम्पल कॉटन, लिलन, जूट, वूल, सिल्क, ये फैब्रिक हमें कैसे प्राप्त होते हैं? इसके सोर्स क्या है? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल। नेचुरल तरीके से प्राप्त होता है। कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन फ्लावर से। कॉटन फैब्रिक हमें किससे मिलता है? कॉटन फ्लावर से। फॉर द एग्जाम्पल स्क्रीन पे आप देखो, कॉटन फ्लावर से जो फैब्रिक्स हमें प्राप्त होता है दैट कॉल्ड इज नेचुरल फाइबर। लिनन हमें फ्लैक्स सीड से प्राप्त होता है, दैट ओनली नेचुरल सोर्स। जूट हमें बैम्बू और जूट प्लांट से प्राप्त होता है, दैट्स ऑल नेचुरल फाइबर्स। वुलन हमें सिप के हेयर से प्राप्त होता है। वूल हम कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ वी गेट वुलन? फ्रॉम sheep hair. Where we get woolen? From sheep hair. Right? And the next one is silk. How we get the silk? सिल्कवॉर्म। Silkworm. ठीक है, तो यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट सोर्स आप देख रहे हैं? 1 2 3 4 5। वन इज द कॉटन, फ्लैक्स, जूट एंड वूल। अब ये डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कीजिए अपने ड्राइंग कॉपी में। नेचुरल फैब्रिक्स में क्या क्या रहता है? सबसे पहला नंबर 1 द कॉटन फैब्रिक। दिस इज द जूट फैब्रिक। सी दिस इज द जूट, हाउ लुक लाइक? थिक एंड रफ। जूट फैब्रिक विथ print. Okay, this is the pure silk, soft and elegant. Have you seen this? Yes. Silk fabric. This is the mull silk. This is the high quality fabric. This is the high quality silk fabric. One side is the cotton effect, see, and one side is silk effect. The name is the mull silk, right? And Name is mull silk. yeah, mull silk. This is the high quality fabric. Okay, high quality silk or Because one side is the cotton, whenever your customer or client wear this fabric, one side is the silk, this side is feel the cotton fabric like. See textures? And what is that jute? Is it cotton or what?
Jute You is said not jute. cotton. Jute from jute fibers. I will share the image. I will share the image. Mm, You can easily get it. okay. And this is the silk. See, Okay. pure silk. Silk from where we get silkworm, Mm, right? For the next example, this is the also silk. Silk's also shining and then soft, very soft. Now this is all natural silk which you are showing, or you are showing also the man-made? This is the silk is the natural fabric, not a man-made. Man-made is the different. Okay, man-made like sequence fabric is not a natural, right? This is the sequence fabric. This is the man-made. Because this is the Mm, main fabric is a georgette synthetic fabric. Synthetic mm, fabric where you get from? Synthetic fabric where you get? From man-made. Man-made fiber, right? mhm. And this is also synthetic. Synthetic very rough. See? Textures and all. I think, did you remember this all fabric I have to use on my designs? Want to see? Yes, ma'am. This all fabric I have to use on my designs. Okay, now what you do? How to make the file about the fabric? This is very important. Collect all 12 sample on the fabric. 12 sample आप collect करेंगे. Okay. Divide the sections. Okay. Do right with stencils. Right here is the natural fabric. Fabric, not a fiber. This side is the man-made fabric. Make the box 3 inch by 3 inch. Draw with black pen and paste here with name. Like man-made is the cotton fabric, you can paste here. Then next you can paste here the woolen fabric. Just do the 4 or 5 sample. This is your second assignment. And the very important price, how many meters? What is the price of cotton fabric? What is the price of jute fabric? I will share the detail of jute fabric. I will share jute fabric. What is the jute fabric? Jute fabric. But there is many types of cotton fabric and different prices. Yeah. Jute fabric. What is the jute fabric? Jute fabric is a type of natural fiber or fabric made from the fiber of the jute plant. The jute plant consists of long, soft, plaster plant fibers that can be spun into thick, strong yarn. These fibers are often used to make a cross inexpensive material used for bag, sacks, and another industrial purpose. Want to see the jute plant? Want to see the jute plant? You get it easily. Jute plant. And I will share the jute plant how look like. Jute plant is the in India. How to look like jute? See this? I shared the link. Wait, stop and share the screen. See? Got it? How to look like jute plant? Got it? Yes, ma'am. देखा कैसे इसको प्रोसेस में लाया जाता है, कैसे काटा जाता है, उसको सुखाया जाता है, उसके तार निकाले जाते हैं, देन उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. जूट प्रोडक्ट देखो, जूट प्रोडक्ट स्क्रीन पे देखो. सी ऑन द स्क्रीन. जूट प्रोडक्ट
जूट से आप क्या क्या बना सकते हैं? बैग, शूज, कुशन्स, कवर. How to look like jute plant? Alia, are you get it? What is the jute plant? Jute bag, everything is here. And you can easily search on the Google also. Got it? What is the jute? Got it?